So last class we discussed the array representation of binary tree and properties of array representation of binary tree also we discussed last class. So these are the properties that for any node at index n, other n is at index that is floor of n minus 1 by 2. And left child index will be 2n plus 1, right child index will be 2n plus 2, and if left child is at index n, then its sibling is at n plus 1, and if right child is at index n, then its sibling is at n minus 1. Now I'll discuss the drawback of array representation. So array representation is not suitable for binary tree other than the complete binary tree because memory is wasted. See here in this example, this is a binary tree, root node x, y is the left child, and z is the right child. And again, in this subtree, z has one left child, that is a, and a has one left child, that is b, and right child c. Now, if we represent this binary tree using array representation, then it will be represented like this. This is the array. The root node index is 0, and here root node is x. So you can see x is written here. And then this index 1, index 2, index 3 like this. So see here we have level 0, level 1, level 2, and level 3. Okay. So three levels are there. So if there are three levels, okay, its level is 3, okay. So level 3, and what is the height of this tree? Can you tell me? Three. Three, sir. Yes, 1, 2, 3. Height is the 3. And if you take as the full binary tree or complete binary tree, okay, with this height, then what will be the maximum number of nodes in this tree with height this 3? So 8 nodes. How many? Here h is 3, so the formula is 2 to the power h minus 1. 2 to the power h plus 1 minus 1. Okay, H plus 1. 2 to the So power h, 15 होगा then. yes 15 होगा, ठीक है. तो सभी जो nodes हैं, all the nodes will be filled in this array from left to right. Okay, और जिस प्लेस में नोड नहीं है कोई सा प्लेस में, तो बैक एंड रहेगा. दैट मेमोरी इज वेस्टेड. सी हियर x is the root node. So first root and root node index is 0. So this is the array, and array index is see here 0 index, root node is written. Okay, and then index 1 left child of this node is y, then index 2 right child. Okay, I have already told you that in each level all the nodes will be taken from left to right. Okay, all the nodes, and all the nodes position is reserved in the array. Whether the node is present or not doesn't matter. The node position is reserved. So in the in the 0th level, you see x is written. In the one level, okay, first level, you see here this level is having maximum 2 nodes. Okay, it can have maximum 2 nodes, so it is written here. This index 1, index 2. So you see yz is written, and we cannot have more nodes than these 2 nodes in this level. Okay, then come to the next level. So in the next level, uh, how many nodes we will have in the next level? In this level, how many? This level 2 means this level will have 4 nodes. Okay, there is a property of binary tree, yes or no? So if this level
is having two nodes, then the next level, okay, will have four nodes. Okay, so four node means this node will have two child, okay, and this node will have two child. Okay, it can have at most four nodes. Okay, so this level can have at most four nodes, and we already have taken the index 0, index 1, index 2. Now in this level the index will be uh, this will be 3, index 3, index 4, index 5, then index 6. Okay, now see this index 3 and index 4, these childs are not present. You see in this diagram, in if you take this child, okay, there is no child here, but if you take this child, its index will be 3, and this the right child of this node will be index 4. Okay, and then this is the left child of this. Okay, so this index will be 5, and its right child, its index will be 6. Now see, in this level we don't have this y node's left child and y node's right child. So we don't have its left child and right child, but in the array representation we have to uh, keep places for these two child nodes. Okay, their places are reserved. Whether you use that or you don't use doesn't matter, but their places are reserved. You see, 3 and 4, these are reserved here. Okay, but 5, you see, fifth one, so this is written here in index 5. Okay, 5 index A is written. Then 6 index also, you see, it doesn't have any right child, so 6 is vacant. Okay, then you see, again in the next level, how many nodes we will have in the next level? How many nodes we can have maximum? How many nodes we can have in the next level of this, here in this level? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to Sir, the power 8. 2, yes, 2 to the power 3, 8. So you'll have 8 nodes here. Okay, so here up to this index 6 is completed. Okay, up to this, then here in this level the index will start from where? कहाँ से शुरू होगा इंडेक्स? 7 7. से लेके, ओके, 7 8 9 ऐसे करके जाएगा. तो अभी देखो, इसका अगर होता है ऐसे लेफ्ट चाइल्ड होता और एक लेफ्ट चाइल्ड होता, फिर इन दोनों का ऐसे दो होता, ठीक है ना, तो ये 4 होते, लेकिन ये 4 नहीं है तो 4 छोड़ दो, ठीक है ना. ऑलरेडी इसका एक नहीं था, ये वाला 7 से शुरू किए, 7 8 9 10, ये 4 नहीं है इधर, ठीक है ना, तो उनका प्लेस रिजर्व रहेगा, छोड़ दो उनको. देन इसके बाद देखो ये बी है, बी देखो यहाँ लिखा गया 11 में. देन 12 में देखो ये इसमें ये है 12 में, ठीक है ना. उसके बाद तो और नहीं है तो छोड़ दो, और नहीं लिख रहे हैं. अभी देखो बीच में ये जो देख रहे हो खाली प्लेसेस हैं, यहाँ पर इनके लिए नोड नहीं है हिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर इस आरे में ये जगह वैकेंट रह रहा है, हम यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन वैकेंट रह रहा है, रिजर्व रह रहा है, ठीक है ना. सो दिस मेमोरीज आर वेस्टेड, दिस आर नॉट यूज्ड एफिशिएंटली. ओके, समझ में आ रहा है ना? Hmm? Yes, sir. So this is the drawback of array representation. Okay. Any question in this? No, sir. Now I'll discuss the linked list representation of binary tree, which is otherwise known as linked representation. Okay. So binary tree can be created by creating the nodes dynamically. Okay, and we can use pointer here. So here the data will be stored in the nodes. Data is treated as node, and we use pointers. And each node, see, this is a binary tree. You can see this is a binary tree, and this is the root node. Then it is having, this is left child, right child, and this node has left child, no right child, but this node has a left child and right child. Okay, so we can use linked list here, and all the data is represented by using nodes. Okay, and the node has three fields, three parts: data part, and left pointer part, and right pointer part. So each node has three parts: data part, left pointer part, and right pointer part. So you can see this node, how it is, this tree, how it is represented using linked list representation. Here you can see. So this is a node. So here how many nodes? All the nodes are represented here. See, node A, node B, node C, node D, E, F, C. There is written here A, B, C, D, E, A. Okay.
Now all the nodes having three fields: data field, then left pointer field, right pointer field. So what is the use of left pointer field and what is the use of right pointer field? This left pointer field is used, this left pointer field contains address of the left child. That means it is a pointer to the left child, pointer to its left child. Similarly, this right pointer field, it contains address of the right child. Okay, that means this is the pointer to its right side. Okay, now see here, uh, this node's left child is B and this node is right child is C. Now see, this is the node A, okay, root node, and data is A written, and the left child you see, B is left child, C is right child. Now this left pointer, it contains address of this node B, so it will contain the address of B. Similarly, this field, this right pointer, it will contain address of this node C. Okay, so here we have pointer to this node, and here we have pointer to this node. And now see, this node B has only one left child. It does not have any right child. Okay. And if there is no right child, then that field will contain null value. So you see, node B has a left child. So see, left child here written, and no, this node B is right child. There is no right child. So this pointed to the right pointer field. This value will be null value if there is no right child. Okay. Similarly, you see this node D, and this node D has no left child and no right child. That's why its left pointer field is null and right pointer field also null. Null means here I have given this cross mark, right? Now see this node C, it is the left child of this root node that is written here. And this node C has two children, one left child and the other one right child. See how it is written. So E is written here and F is written here. So this part. So C is the data and left pointer, right pointer. Left pointer is pointing to this node, right pointer is pointing to this node. Okay. Then this node E has no left child, right child. So left pointer, right pointer value null. Similarly, node F, no left child and no right child. So left pointer and right pointer value is null. Okay. So this is the linked list representation of binary. Okay. So this way, the binary tree is represented in the memory by using linked list, and it is otherwise known as linked representation of binary tree. Okay. So any question? Okay. Since there is no question, I'm moving to the next slide. Now, implementation of binary tree using the linked list. So how we will implement, you see, this is the binary tree, okay, and this is the linked representation of this binary tree. And we already discussed how this is represented using the linked list in the previous slide. And one more thing you need to remember, that this root node is pointed by a external pointer, that is root. You can see here is the root pointer. So when we represent the binary tree by using linked list, the address of this root node is kept and stored in the external pointer that is known as root. You can see this is the external pointer root, and it contains address of this root node. Okay, and all other things we already discussed. So this is the representation. This is the linked representation of binary tree. Okay, and we use nodes, and we have to create the nodes. Okay, if we want to implement the binary tree using linked list, then we have to create the node first. Okay, and for creating node we have to use the structure as we are using in the linked list. So this is the structure for the node of the uh, binary tree. So struct node, okay, this is as we were using in the linked list. Okay, so struct node, then in data for the data, then struct node star left, this is for the left pointer. Okay, pointer to the left child, and struct node star right, this is pointer to the right child. Okay, so this is the structure, and then we can declare pointer or variable of this structure type. Okay, so this is the root pointer that stores address of this root node, so that can be declared this way: struct node star root. So this root is a pointer to this root node. Okay,
So this root node is also a node. So node is of this type. So that's why struct node star root. Okay, struct node star root we have to declare. Okay. Then create a binary tree. So for creating a binary tree, this is the C code. So first of all, yeah, this is the function name. Okay, struct node star create node. Okay, value. So value will pass while calling this function. So here see, first of all you have to create the node. So struct node star new node. New node is the pointer which will store address of the newly created node. So it's equal to malloc size of struct node. Okay, and then new node item. Okay, because see this is the structure. So item is the data. So new node item equals to value. The new node left equals to null. So here create means it will create a node with no left child and no right child. Only data value it will have. So new node left is null and new node right is also null. And return new node. So return new node means it will return the address of this node. So we will, whenever you will call this function, okay, this function will return address of the newly created node. Okay, and yes, so here one more thing I need to tell you. Yes, here can you tell me what is left here? यहाँ पे कुछ छूटा है, बोलो. Sir, struct node star. Yes, so you have to write here struct node star, because you have to typecast this, because see this is creating memory, creating node and allocating memory for a node. So you have to typecast this. So it should be struct node star, then this malloc side option. Okay, fine. So here node is created, and suppose you want to insert a left child. Okay, then you can use this function insert left. And if you want to insert right child to the root node, then you can use this insert right function. Okay, and see what is all these are recursive function. Okay, so you can recursively call this function. And see, insert on the left of the node. How to insert by using this function? See, struct node star insert left, and struct node star root. So you have to pass the root node. Okay, where you want to insert a new node in the left side. Okay, so you have to pass the root also while calling this function, and also you have to pass the value that will be as the value that will be given as the value of that node. So value, that's int value. Okay, I see root left. Okay, root you are passing here, and root arrow left equals to create node value. So again we are calling this function create node function. Okay, because you will create the node. Okay, we'll create the node, and we are passing the value. That value will be the value of that node. Okay, and return root left. Okay, return root left means, so this left node address it will return. Okay, so it will create the left node. Okay, left child, and left child value will be this value, and left child left pointer right pointer will be null as done here. Okay, and it will return the address of that left child. Okay, whoever call this. Similarly, insert on the right of the node. Okay, how to do that? By using this function struct node star insert right. Then struct node star root, you have to pass the root. Okay, root node address you have to pass. Then value also you have to pass while calling this function. So if you want to insert right, so you have to do this. So right root arrow right equals to create node. You have to call this create node inside this create node value you have to pass. Okay, and then you have to return root arrow right. So this right child node address will be returned by this function. Okay, so these are the functions for inserting left child and right child. This is the main function, and in main function you see struct node star root equals to create node. Okay, and create node is the function we discussed here. This is create node, and while calling this function we pass the value of the node. Okay, so one is passed here. Okay, so this one will be the value of the root node. Okay, so first node is created, then insert left root 2. So this insert left means we will insert the left child. So this function we are calling, and you have to pass the root node address you have to pass. So this is the root node address. Root is the variable that contains address of the root node.
So that is I'm passing here. Okay, then comma to value of the node we are passing. So it will create the left. It will insert the new node with value these two. Okay, in the left side. Okay, that will be the left child. Similarly, insert right the root 3. Okay, root we are passing and value we are passing 3. Okay, so now the 3 will be, this will be the root node 1, and the 2 will be the left child and 3 will be the right child. Then again we are calling this insert left. The same function we are calling insert left, this insert left, this function we are calling. Okay, and we are passing is the pointer, this value. Okay, this root value, what we are passing now, the left child we are passing, left child we are passing as the root node. That means, and value is 4. Okay, that means now the newly inserted node whose value is 4 will be the left child of which node? Can you tell me? Left child of which node? Can you tell सर me? रूट Root- Which root? सर जो प्रीवियस इंसर्ट लेफ्ट में जो रूट था उसका लेफ्ट Kitna value bolo, value bolo. सर 2 Yes, 2. So now this node, this 4 will be left child of which node? 2. This 2. Okay. Node 4 will be left child of this 2. Okay. ବାବା ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସର ଅଳ୍ପ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି? Who is that? ଏଇଟା ମୋତେ Okay. So this is the function, C code for creating a binary tree. Okay. Using linked list. Any question? सर जो क्रिएट फंक्शन कॉल हो रहा है वो हाँ एक ही नोड के लिए हो रहा है सर हाँ, एक ही नोड के लिए हो रहा है और उसका लेफ्ट जो पॉइंटर है, राइट पॉइंटर है, उसको नल कर रहा है, खाली वैल्यू इंसर्ट कर रहा है. ओके सर लेकिन जब इंसर्ट लेफ्ट कर रहे हो तो लेफ्ट चाइल्ड बना रहा है, इंसर्ट राइट कर रहे हो राइट चाइल्ड बना है. किसका? ना जो नोड तुम पास करोगे, जो रूट नोड जो पास करोगे उसी वहीं पर इंसर्ट करोगे. समझ रहे हो मेरी बात? तुमने पहले यहाँ पर रूट इंसर्ट पास किया. रूट रूट मतलब कौन सा है? ये वाला, इसका ये वाला जो नोड पहला नोड बनाया था उसका एड्रेस. अभी यहाँ पर देखो, इसको कॉल कर रहे हो, रूट लेफ्ट पास कर रहे हो. रूट लेफ्ट मतलब कौन सा? ये वाला. ठीक है ना? ओके. तो जब भी यस नोड बना रहे हो उसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, सॉरी लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर वो नल कर रहे हैं. ठीक है. So this is one kind of code. You can write your code. Different codes can be written. Okay. This is one kind of code. Okay. So is it clear? Or any question? Okay. Since there is no question, I'm moving to the next slide. Okay. So now I'm going to discuss the operations on binary tree. So there are different operations that can be performed on binary tree. The binary tree, tree traversal is one of the operations, and insertion of nodes, deletion of nodes, searching for a node. So these are the operations. So first of all, I am going to discuss this tree traversal. So I'm going to discuss binary tree traversal. Tree traversal means processing of each node. I mean, visit each node and process it. Okay, exactly once. This is known as traversal. Okay. So what is traversal? We already have discussed many times. So traversing means visiting all the nodes exactly once. Okay. So here in the tree also, in the binary tree also, we will visit all the nodes exactly once. And how we will visit? There are three methods. Okay. Preorder traversal, inorder traversal, and postorder traversal.
So traversing means visiting each node of the tree exactly once. Okay, we'll visit each and every node, but exactly once. And how we'll visit? You see, three methods are there. Okay, pre-order traversal, in-order traversal, and post-order traversal. Okay. So now I'm going to discuss all these traversals one by one in more detail. So first is pre-order traversal. So the algorithm for traversing using this method, pre-order traversal, is like this. So first visit the root node. Okay. First of all, you have to visit the root node of the tree. See, you will be given the tree will be given to you, and you have to traverse or visit all the nodes of the tree exactly once. Okay. And according to this method, pre-order traversal, first of all you have to visit the root node, okay, and process it, and then traverse the left subtree in pre-order again. Okay, from the root node you have to again go to the left subtree of that root node in pre-order manner. Okay, and then after completing the traversing the left subtree in pre-order, again do this, traverse the right subtree in pre-order again. Okay, so this is the order: first root node, then left, then right. Okay, so this is the algorithm for pre-order traversal. Let us take one example. This is a binary tree. Okay, this is root node A, and B is the left child of A, C is the right child of A. Similarly, B has two children. D is the left child of B, and E is the right child of B. And this side, uh, F is the left child of C, and G is the right child of C. Okay. Now we will traverse this tree using pre-order traversal. Okay. So traversing means we will visit all the nodes and process. And here process means we will print. Okay, so here process means we will print. So traverse means we will visit and print. Okay, and we will use this method. You see, so according to this method, see how it is done. So this is done this way. So first root node, then left, then right. Okay, now come to the root node first. So this is the tree. So what is the root node here? What's the root node of this tree? Sir, A. A is the root node. So first print A. See, A is printed. You can see this is the pre-order traversal. So first A is printed here. Okay. So root is printed, first root. Then what? Left. Okay. Then left. Okay. So come to the left of this root. So left, come to left. Okay. So while coming this to this left, okay. Again, what to do? Again root is coming. This is a root for this two children, yes or no? This is a root, so you have to again write this root. मतलब रूट से शुरू कर रहे हैं और लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है ना? रूट से शुरू करेंगे, लेफ्ट में जाएंगे, और जब आ रहे हैं लेफ्ट में, उधर जब लेफ्ट में जा रहे हैं तो वहां पर जाते वक्त जब भी कोई रूट मिलेगा उसको प्रिंट करना है, ठीक है ना? रूट अगर मिल रहा है तो उसको प्रिंट करना है, ठीक है? फिर लेफ्ट में जाना है, पूरा सारा लेफ्ट खत्म होने के बाद फिर राइट को जाना है, ठीक है? तो देखो पहले हमने ए को रूट से शुरू किए, ए लिखे यहाँ पे, प्रिंट किए, फिर लेफ्ट में आए क्योंकि लेफ्ट में जाना है अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, लेफ्ट में आए, और जब जा रहे हैं लेफ्ट में, तो सी ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर, देखो यहाँ पर लिखा है प्री ऑर्डर, ठीक है ना? प्री ऑर्डर मतलब रूट को ही प्रिंट करना है, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर। ओके, सो रूट से शुरू किए, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, इधर आए और उसको प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है। प्री ऑर्डर मतलब क्या? रूट को प्रिंट करेंगे, देखो यहाँ पर फिर से एक रूट आ गया, बी, बी को लिखे, ठीक है ना? तो इसका फिर से लेफ्ट में जाओ, बी के लेफ्ट में फिर इधर आ जाओ, कौन सा? डी, ठीक है ना? और डी के बाद और कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो डी इज द लेफ्ट, लेफ्ट में आ गए, और डी के बाद और कुछ नहीं है, तो क्या करना है? डी को प्रिंट करना है। देखो डी को यहाँ प्रिंट किए, ठीक है ना? डी को प्रिंट किए, तो ये रूट खत्म हो गया, लेफ्ट भी खत्म हो गया। अभी किधर जाना है? राइट में जाना है, राइट। तो राइट कौन से राइट में जाओगे? इमीडिएट उसके बाद वाला जो राइट, मतलब इसके बाद इस सब ट्री का राइट चाइल्ड जो है,
ये जो सब ट्री है इसका राइट में जाना है, तो इसका रूट तो खत्म हो गया ट्रैवर्सिंग, डी मतलब लेफ्ट भी खत्म हो गया। अब इसका राइट चाइल्ड कौन सा है, ये देखो ई को यहाँ पर प्रिंट किए, ठीक है ना, ई को प्रिंट कर लिए। ई को प्रिंट जब करने के बाद देखो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया ट्रैवर्सिंग, ये पूरा सब ट्री खत्म हो गया, यहाँ तक रूट भी खत्म हो गया ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, राइट को जाना है, इस राइट को। और अब राइट कौन सा, ये जो रूट है इस रूट के राइट सब ट्री में जाना है, ठीक है ना। और राइट सब ट्री में जब जा रहे हैं किस हिसाब से जाएंगे, वही इन प्री ऑर्डर मैनर, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री इन प्री ऑर्डर मैनर। देखो फिर से इधर आओ, राइट सब ट्री इन प्री ऑर्डर मैनर, राइट में आए, राइट में जब आ रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें अगर कोई रूट मिलता है तो उसको प्रिंट करना है। यहाँ पर देखो एक रूट नोड मिल गया सी, सी को प्रिंट कर लिए। उसके बाद फिर किधर जाना है, फिर से अगर ये सब ट्री है तो उसमें क्या करना है, लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में आगे देखो, लेफ्ट में आगे कौन क्या है, एफ है, एफ को प्रिंट किए, ठीक है। इसके बाद और कोई नहीं, कुछ नहीं है, तो एफ को प्रिंट कर लिए। फिर लेफ्ट खत्म होने के बाद कौन सा जाना है, राइट को, देखो राइट में इधर आ गए, इस सब ट्री का राइट जी, जी को यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ठीक है, खत्म हो गया पूरा का पूरा। देखो इस ट्री में हमने सारा नोड को विजिट किया और उसको प्रोसेस किया। कोई बचा है क्या और, नहीं सर। नहीं बच्चों, तो ये सबको समझ में है। दिस इज द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ दिस बाइनरी, okay. If you are asked to find the pre-order traversal of a binary tree, then you have to do this like this, and you have to write the nodes value like this. Okay, so pre-order traversal of this tree is this, these are the values, you have to write this thing, okay. Is that clear on your question? ये समझ में आया? यस सर। Now moving to the next slide. Yes, question, find the pre-order traversal of the following binary tree. Okay, this is the binary tree, okay. So find the pre-order traversal of the following one, this tree, okay. Can you find this, can you find the pre-order traversal of the following tree? Can you find? सर अगर लेफ्ट सर ए बी नोड नहीं होगा तो फिर क्या डायरेक्टली राइट को जाएंगे? क्या बोले? सर अगर कोई एक रूट पेरेंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट डायरेक्टली राइट को सर राइट को जाओगे, प्रिंट डायरेक्ट राइट को जाओगे। लेकिन जब तुम जा रहे हो लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, अगर तुम्हें कोई रूट मिलता है तो पहले रूट को प्रिंट करना है अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम। देखो रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट, ठीक है। तो अभी बताओ क्या होगा, कोई बताएगा? ए बी डी। अच्छा प्रीतम बोल रहे हो या कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, विल से, कौन बोलेगा? कोई नहीं, यस प्रतिहारी, टेल, हम प्रतिहारी बोलो, कहाँ से शुरू करें, रूट से है कि ए नहीं? से। हाँ ए से, इज द रूट, बोलो पहले क्या प्रिंट करेंगे? सर ए, हाँ ए फिर बी, हाँ बी, देन डी, डी, सर फिर सी, सी, देन ई, ई, जी, जी, सर फिर एफ, एफ, एच, एच, आई। आई। वेरी गुड, दिस इज द आंसर। ये बोले थे ना तुम? हाँ सर। यस सर। ये सबको समझ में आ गया, किसको समझ में नहीं आया? हाँ okay. So here see, again I am explaining this. So we will start from the root. According to this the algorithm, you have to first print the root node, then traverse the left subtree in order, then traverse the right subtree in order. So print the root node, starting from this root node, A is printed here, okay. Then left subtree में आ जाओ,
और लेफ्ट सब ट्री में जब जा रहे हो तो रूट नोड अगर मिलेगा तो उसको प्रिंट करना है, बी इज द रूट नोड, उसको प्रिंट किया यहाँ पे। फिर लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट नहीं है तो छोड़ दो उसको, लेफ्ट में ये नहीं है तो क्या करेंगे, फिर से राइट को जाना है, राइट में क्या डी, डी को प्रिंट किया। अब ये खत्म हो गया, ठीक है ना, ये लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया और तो कुछ नहीं है इधर। अभी जाओ सीधा राइट में जाओ, राइट सब ट्री, राइट सब ट्री में ट्रैवल जब कर रहे हैं, पहला रूट नोड सी आ गया, सी को प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद इसका लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट सब ट्री, जब जा रहे हैं लेफ्ट में, रूट नोड कौन सा है, ई है, उसको प्रिंट किया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर इसका लेफ्ट में जा रहे हैं, जी, जी को प्रिंट किया, और अब इसका राइट को जाना है, इसका राइट कुछ नहीं है तो छोड़ दो, पूरा सीधा आ जाओ इधर, ऊपर आ जाओ। ऊपर आने के बाद फिर से जाओ इसका राइट सेक्टर में जाओ, जब जा रहे हैं तो यहाँ पर रूट नोड मिला है, एच को प्रिंट किए। और इसका लेफ्ट में जाना है, एच, एच इज द लास्ट नोड, सो एच को प्रिंट किया और कुछ नहीं है, एच को प्रिंट किए। और फिर देखो रूट खत्म हो गया, लेफ्ट खत्म हो गया, अब राइट को जाना है, राइट को इधर आ गया, एच, आई, आई को प्रिंट किया, ठीक है। So this is the pre-order traversal of this tree. Okay. Okay. So this is the C function, the recursive C function for pre-order traversal. Okay. So function name is here pre-order traversal, and the arguments here is root node you have to pass. You have to pass root node while calling this function. Okay. So because the traverse will start from the root node, so you have to pass the address of root node to this function. That's why start node start root. Okay. Now while traversing, if root value is null, so if root value is null, that means what? There is, the tree is empty. Yes or no? I told you that the root is the external pointer that is pointing to the root node of the tree. Okay. So if the value of root pointer is null, that means there is no node. The tree is empty. Okay. Else, if this is not satisfied, that means there are some nodes, okay, in the tree. And then what to do, you use the algorithm. So first what to do, first root node, okay, print the root node, then traverse left, then traverse right, okay, using preorder. So you see printf %d root item, so this is the structure, okay, and item is the data value that we are printing here, okay, because we started here from the root, so root item data value is printed here. Then what to do, traverse left subtree. So again we have to call this function, okay, recursively pre-order traversal, and what we will pass here, root arrow left. So root arrow left means the left child address you have to pass, so that it will traverse the left subtree. So that is passed here, root arrow left, and after it will call its left, so like that it will continue. It is because it is a recursive function, okay. And after that you call this pre-order traversal root arrow right. Okay, so this is the C function for pre-order traversal. Okay, any question? No, Okay, sir. so application of pre-order traversal is it is used to get prefix expression of an expression tree. Okay, and what is expression tree we'll discuss later. Then it is also used to create a copy of the tree. Okay, so these are the applications of pre-order traversal. The next is in-order traversal, and the algorithm for in-order traversal is this: traverse the left subtree in order, okay, then visit the root node, and then traverse the right subtree in order, okay, and this is the order: first left, then root, then right, okay। तुम्हें एक चीज याद रखना है कि प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर जो तीन टाइप का है, इसमें प्री मतलब रूट जो है, रूट पहले होगा, ठीक है ना, प्री मतलब रूट पहले, इन मतलब रूट बीच में, लेफ्ट राइट की तीन चीज यहाँ पे है, लेफ्ट है, राइट है और रूट है। प्री मतलब रूट लेफ्ट में होगा, रूट का पोजीशन, देन लेफ्ट देन राइट, और इन मतलब रूट बीच में होगा, देन लेफ्ट लेफ्ट साइड में, राइट राइट साइड में, ठीक है ना। पहले इन ऑर्डर में क्या करना है, पहले लेफ्ट को विजिट करना है, लेफ्ट सब ट्री, देन रूट नोड, देन राइट साइड, ओके। जैसे हम प्री ऑर्डर में किए थे, कैसे, पहला रूट, प्री मतलब रूट, रूट का पोजीशन को तुम्हें लेना है,
ये जो इन हो या प्री हो या पोस्ट हो, इन तीनों में रूट को ही तुम्हें कंसीडर करना है। प्री मतलब रूट विल बी एट द लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट। इन मतलब रूट विल बी इन द मिडिल। पोस्ट मतलब root will be in the right. Okay, so this is in order traversal, that's why root will be in the middle, okay, of this left and right. So that's why, so this is left then root then right. So this is the algorithm. Traverse the left subtree in order, then visit the root node, then traverse the right subtree in order. Okay, so this is the in-order traversal algorithm. Okay, and how to remember this? By using this convention. In means between. In between the left and right. Root will be in the middle. In-order means root will be in the middle. Okay, and pre-order means root will be in the left hand side. Okay, first root, then left, then right. And post means root will be in the right hand side. Okay, left, right, and root. So this is the in-order traversal. Now let us take one example for this in-order traversal. So the same example I am using. So this is the tree, okay, and the algorithm says you have to first traverse the left, then root, then right. Okay, so start from the root, okay, but you have to traverse to the left. Okay, so we are starting from root, okay, but I am not printing root. You see, I am not printing root. I am going to left. So coming to left, और इसके बाद भी लेफ्ट है, जहाँ तक लेफ्ट है वहाँ तक जाओ। तो इधर लेफ्ट, यहाँ आगे, और इसके बाद और कोई है क्या लेफ्ट में? और कोई नहीं है, ठीक है ना, और कोई नहीं है, तो इसको प्रिंट करो, डी को यहाँ प्रिंट कर लिया। तो लेफ्ट के बाद क्या करना है, देखो लेफ्ट के बाद रूट, तो इसका जो रूट है, इसका कौन सा रूट है? बी, बी को प्रिंट करो, देखो बी को प्रिंट किया। फिर रूट के बाद राइट, इसका जो राइट है उसको प्रिंट करो, ये को प्रिंट किया, देखो ये को प्रिंट किया। अब ये लेफ्ट खत्म हो गया, ठीक है ना, ये लेफ्ट खत्म हो गया। अभी क्या करना है, रूट को जाना है, लेफ्ट के बाद रूट, ये लेफ्ट सेप्टिक खत्म हो गया, अब रूट को जाओ ए, ठीक है ना, ए को यहाँ प्रिंट किया, ठीक है। अब ये रूट, ये लेफ्ट सेप्टिक खत्म, रूट खत्म, अभी जाना है किधर? राइट सेप्टिक को जाना है। राइट सेप्टिक में जब जा रहे हो तो जाते वक्त फिर से देखो लेफ्ट में जाना है, इधर पूरा राइट में आए, फिर से उसका लेफ्ट को जाओ, एफ, ठीक है ना। राइट में आ रहे हैं, इसको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, पूरा लेफ्ट में जाना है, यहाँ पर भी वही अप्लाई करना है, ठीक है ना। इन ऑर्डर मतलब पूरा लेफ्ट को पहले जाना है, लेफ्ट को प्रिंट करना है। लेफ्ट कौन सा? एफ, एफ यहाँ प्रिंट किया, देन रूट, रूट सी को प्रिंट किया, देन राइट जी को प्रिंट किया, ठीक है। So this is the in-order traversal of this binary tree. Okay. Any question? Any questions, students? No, sir. No, sir. Now solve this. Find the in-order traversal of the following tree. Who can answer this? Raise your hand. Who can answer this? Raise your hand. Yes. Rudrans Kishore, yeah, tell. Rudrans tell. Sir, D, B, A. D first, okay. Then Sir, B. कौन सा? और एक बार बोलो, और एक बार बोलो। Sir, D, B. D B बोल रहे हो? Yes, sir. नहीं नहीं, गलत है सर बी डी। हाँ बोलो बोलो, कौन बोला? रुको मैं देखूं कौन बोल रहा है। सर बी। कौन बोल रहा है? संपूर्ण, ओके बोलो संपूर्ण, बोलो। सर बी डी। बी डी, यस। ए ए जी ई जी ई सी सी एच एफ आई। एच एफ आई, गुड। ये है ना, ये बोल रहे थे तुम, ये बोल रहे हो ना? Yes, यस sir. सर। सही है ना? अजय किसको समझ में नहीं आया बताओ? किसको समझ में नहीं आया बताओ, ये बोलो। देखो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। ये है एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, फर्स्ट लेफ्ट, देन रूट, देन राइट, ओके, इन ऑर्डर, ओके। सो शुरू तो रूट से ही करना पड़ेगा, तो रूट से शुरू करो, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसका लेफ्ट में जाओ, इसका लेफ्ट कोई नहीं है, ठीक है ना। पहले लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, देन रूट, देन राइट, लेफ्ट रूट देन राइट। तो इसका कोई लेफ्ट तो नहीं है, तो क्या करना है, रूट को, लेफ्ट खत्म हो गया, लेफ्ट नहीं है, देन रूट, सो रूट को प्रिंट किए बी, ओके।
देन राइट को, राइट डी इसका है, डी को प्रिंट किया। अब ये खत्म हो गया, ये सब ट्री खत्म हो गया, तो देन क्या करना है, तो दिस इज लेफ्ट सब ट्री, सो दिस लेफ्ट सब ट्री इज कंप्लीट। देन गो टू द रूट नोड, दिस वन, so that is printed here. Okay, a is printed. Then what to do, then come to the right subtree, and while going to the right subtree again you use this in order traversal, so you have to go to the left. So while going to this C, we'll get to the left side, so coming to this side. Okay, so print this जी जी, सो लेफ्ट खत्म हो गया, देन क्या इसका रूट कौन सा, ई को प्रिंट की। देन इसका राइट को देखो, कोई राइट नहीं है, तो फिर से ऊपर जाओ, ठीक है ना, ऊपर जाओ, ये खत्म हो चुका है, ठीक है ना, नहीं ये खत्म नहीं है, लेफ्ट खत्म हो गया, ठीक है ना, जी ई खत्म हो गया। अब लेफ्ट के बाद कौन सा रूट, लेफ्ट के बाद रूट, ये देखो रूट यहाँ सी प्रिंट किया। देन राइट को आ जाओ, राइट को इधर आ गए, और फिर से कहना लेफ्ट को जाना है, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट है इधर, एच एच को प्रिंट किया। देन रूट एफ, एफ को प्रिंट किया। देन राइट एच। ओके, so this is the inorder traversal of this tree. Okay, fine. Now this is the recursive C function for inorder traversal. So function name is inorder traversal, and here you have to pass the root node address. Okay, while calling this function, that's a struct node star root. Now you check whether the tree is empty or not. If root value is empty, then you return. Okay, otherwise you again call this recursive function in order traversal and root arrow left. Okay, because this algorithm says first left, then root, then right. That's why calling this function in order traversal root arrow left, then print this root value, then in order traversal root arrow right. Okay, so पहले left, then root, then right. Okay, so this is the C function. Okay, and the application of this is to get, it is used to get infix expression for an expression tree. Okay, then post order traversal, and in post order, as I told you that you have to first traverse the left subtree in post order, then traverse the right subtree in post order, then visit the root node. Okay, so I told you that post order means root node will be in the right hand side. Okay, see, root is on the right, so left, right, then root. So post means root will be in the right, so left, right, root. Okay, so first left, then right, then root. Okay, now let us take one example, the same tree I'm taking. So you see here, uh, so left, right, and root. Okay, so starting from this root node, you have to go to the left. So going to the left, then again left. So this is the last. उसके बाद और कोई नहीं है. So D को print करें, देखो D. Then कौन सा करेंगे, राइट, लेफ्ट खत्म होने का, इस सब ट्री में लेफ्ट खत्म हो गया, देन इस सब ट्री का राइट कौन सा, ई को प्रिंट किया, देन रूट, रूट इसका ये है, बी, बी को प्रिंट किया, देन ये खत्म हो गया, ठीक है ना, लेफ्ट खत्म हो गया, लेफ्ट सब ट्री खत्म। अब इस रूट नोड का लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया, अब किधर जाना है, राइट को जाना है, बिकॉज लेफ्ट राइट, उसके बाद रूट, तो राइट को आ जाओ, राइट में जब आ रहे हैं इसका फिर लेफ्ट को जाना है, लेफ्ट एफ, देखो एफ को प्रिंट किया, देन इसका राइट जी, जी को प्रिंट किया, देन इसका रूट ये वाला सी को। अब ये राइट खत्म हो गया, पूरा जो पहला रूट था उसके उसको प्रिंट कर, देखो ए को प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द पोस्ट ट्रैवर्सल ऑफ दिस ट्री। ओके, एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, now you do this, find the post traversal of the following tree. Can tell? Om Tiwari, Om Pratyar, tell. Yes, sir. Sir, B D. Sorry, D B. बोलो और एक बार। Sir, B, B हाँ, then B. B, then Sir, G. G, then Sir, E. E, then Then C. C, Sir, ना ना then ना नहीं, गलत है, C नहीं होगा, Sir, H, 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 then I C H, उसके बाद H, I, I, yes, then C, F. H I के बाद कौन सा है? F. F, F, F के बाद E. C, C, C के बाद A. A. A, yes, good. So this is the post order traversal. Okay, so इधर आ जाओ, लेफ्ट राइट रूट करना है
तो लेफ्ट में आ गए, इसका लेफ्ट नहीं है तो राइट को प्रिंट करो, राइट। ओके, देन रूट बी को प्रिंट किए, देन आ जाओ इधर, ये लेफ्ट खत्म हो गया, फिर से राइट में जाओ, देखो राइट में इधर आ रहे हैं, राइट में जब जा रहे हो इसका फिर लेफ्ट में जाओ, जी जी, इसका राइट नहीं है, राइट छोड़ो, रूट को ई को, ठीक है। देन फिर से इधर आ जाओ लेफ्ट, राइट, इस राइट में जाने का फिर से लेफ्ट एच, ओके, देन राइट आई, देन एफ, okay, then C, then A, okay. So this is the post order traversal of this one, okay. And this is the recursive function, C function for post order traversal, okay. Function name post order traversal struct node star root. So you have to pass the root node address while calling this function, and you're checking whether the tree is empty or not. If empty, then return, all else again call this postal traversal, okay. And first what we are traversing, left node, so pass this root arrow left, then right, so call this function again, pass root arrow right, and then print this value. So for printing, just write the root node, print the root node, okay. So personality root arrow item for printing the root. This is the post order traversal function, okay. And application of this is it is used to get in fixed expression of an expression tree, and it is also used to delete the tree, and this is because it deletes the children first and then it deletes the parent, okay. So these are the applications of post order traversal, okay. Any सर question? सर कल क्विज में अप टू कितना तक आएगा? क्विज में तुम्हारा आएगा, मतलब ट्री नहीं आएगा, ट्री के पहले तक, सर लिंक लिस्ट। हाँ लिंक लिस्ट तक आएगा, ठीक है सर। okay. So any question from this? नो Okay, सर। okay, okay, fine. So with this, I stop here, and yeah, this is the question that we already discussed. Okay, find the inner period and post order traversal of the printing. We already discussed this. Okay. So with this, I stop here. Okay, and the rest we'll discuss in the next class. Thank you. थैंक यू सर।